हाय एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड आज का जो प्रश्न रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस के ऊपर आज का क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 6। द पेरेंट ऑफ अ 5-year-old states that the child has been having diarrhea for 24 hours, vomited twice 2 hours ago, now claims to be thirsty. The parent asks what to offer the child because the child is refusing Pedialyte. What is the nurse's most appropriate response? तो ये है आपका सिचुएशन। तो इसके बेसिस पे इसके आधार पे आपको बताना है कि नर्स के सबसे अच्छे appropriate response क्या हो सकता है। Let's start with the points. You can offer clear diet soda such as Sprite and ginger ale. Now, when Pedialyte is not tolerated, it is usually recommended that clear sodas and juices be diluted. And diet beverages are not recommended because the sugar is needed to help the sodium be reabsorbed. तो यहाँ पे ये नहीं होगा appropriate response. Second, Pedialyte is really the best thing for your child who, if thirsty enough, will eventually drink it. तो ये जो Pedialyte है, it's the best choice. Now, if the child is not encouraged to drink Pedialyte, then the child may become severely dehydrated. So, other ways to encourage oral rehydration needs to be considered. Okay, तो ये भी नहीं हो रहा है. Next है, Pedialyte is really the best thing for your child. Allow your child some choice in the way to take it by offering small amounts in a spoon, medicine cup or syringe. तो Pedialyte बिल्कुल फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए as recommended by the American Academy of Pediatrics. Offering the child appropriate choices may allow the child to feel empowered and less likely to refuse the Pedialyte. So small frequent amounts are usually better tolerated. तो ये एक अच्छा appropriate response हो सकता है. Next, it really does not matter what your child drinks as long as it is kept down. Try offering small amounts of fluids in medicine cups. So, offering small amounts of liquids is important, and the type of beverage does not matter because many fluids may increase the vomiting and diarrhea. तो ये भी उतना अच्छा response नहीं हो रहा है. Moving to the next question. The nurse is caring for a 9-month-old child with diarrhea secondary to rotavirus. The child has not vomited and is mildly dehydrated, which is likely to be included in the discharge teaching. तो यहाँ पे बताया गया है कि किसको हम इंक्लूड कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ डिस्चार्ज टीचिंग. Administer loperamide, that is imodium, as needed. Loperamide, that is imodium, slows the intestinal motility and allows the overgrowth of organisms and should therefore be avoided. तो ये include नहीं कर सकते हैं उस हिसाब से. Second, administer the bismuth subsalicylate, that is kaopectate, as needed. तो ये जो बिस्मथ सबसलाइसाइलेट जो है, दैट इज केओपेक्टेट, it slows down the intestinal motility and allows the overgrowth of organisms and should therefore be avoided. तो ये नहीं हो सकता है. नेक्स्ट है कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग पर रूटीन. तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है इट इज़ यूजुअली वेल टॉलरेटेड एंड हेल्प्स प्रिवेंट डेथ ऑफ द इंटेस्टाइनल विली एंड मैल एब्जॉर्प्शन. तो ये एक लाइकली आप इंक्लूड कर सकते हैं डिस्चार्ज टीचिंग में. नेक्स्ट है द इन्फेंट में रिटर्न टू डे केयर 24 आवर्स आफ्टर द एंटीबायोटिक्स हैव बीन स्टार्टेड. तो एंटीबायोटिक्स जो है दीज आर नॉट इफेक्टिव इन वायरसेस. ठीक है, चिल्ड्रन शुड नॉट रिटर्न टू डे केयर वाइल दे आर स्टिल हैविंग डायरिया. ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स नंबर 3 करेक्ट रहेगा.
नेक्स्ट है विच चाइल्ड कैन बी डिस्चार्ज्ड विदाउट फर्दर इवैल्यूएशन, कौन से बच्चे को डिस्चार्ज किया जा सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फिर फर्दर इवैल्यूएशन से के बाद, लाइक विदाउट द नीड ऑफ फर्दर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, फर्दर इवैल्यूएशन से पहले आप कौन से बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हैं, वही क्वेश्चन है। आते हैं पॉइंट्स पे। A 2-year old who has had 24 hours of watery diarrhea that has changed to bloody diarrhea in the past 12 hours. ऐसे केसेस में आप बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। डायरिया कंटेनिंग ब्लड नीड्स फर्दर इवैल्यूएशन ऑब्वियसली टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द ब्लड, and the child blood counts and the electrolytic balance needs to be tested. तो definitely ये तो नहीं होगा। Second one, a 3-year-old who had a relapse of one diarrhea episode after restarting a normal diet. Now, it is common for children to have a relapse of diarrhea after resuming a regular diet. तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर भी हम दो पॉइंट जो बाकी है वो चेक कर लेते हैं। 6-year-old who has been having vomiting and diarrhea for 2 days and has decreased urine output. तो ये Now, children who have had vomiting and diarrhea for more than 2 days require evaluation to determine whether any kind of IV rehydration and hospital admission are necessary or not. ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को नहीं छोड़ सकते आप without further evaluation. Next, a 10-year-old who has just returned from a scout camping trip and has had several episodes of diarrhea. क्या हम ऐसे बच्चे को छोड़ सकते हैं without further evaluation? देखिए, diarrhea following a camping trip needs further evaluation of course because it may be caused by bacteria or parasites. तो इसलिए ये हम बच्चे को ऐसे हालत में छोड़ नहीं सकते हैं। Next question. The nurse receives a call from the parent of a 10-month-old who has vomited 3 times in the past 8 hours. The parent describes the baby as playful and wanting to drink. The parent asks the nurse what to give the child. Select the nurse's best response. Replace the next feeding with regular water and see if that is better tolerated. देखिए, फ्री वाटर जो है should not be given at all because it does not contain any kind of electrolytes and can lead to critical electrolyte imbalances. तो ये तो गलत response हो गया. Do not allow your baby to eat any solids. Give half the normal formula feeding and see if that is better tolerated. देखिए, formula वाली चीज़ें should be avoided and clear liquids such as Pedialyte should be offered. ठीक है, तो ये भी गलत response हो गया. Third, do not let your baby eat or drink anything for 24 hours to give the stomach a chance to rest. 24 hours बच्चे को कुछ नहीं खिलाना, ये बहुत ही लॉन्ग हो गया टाइम for an infant to remain in PO. So the infant needs to drink a rehydration solution such as Pedialyte in order to avoid severe dehydration. ये भी गलत response हो गया. Give your child half ounce of Pedialyte every 10 minutes. If vomiting continues, wait an hour and then repeat what you previously gave. So offering small amounts of clear liquids is usually well tolerated. So if the child vomits, and make NPO for an hour to allow the stomach to rest and then restart the fluids. The child in this scenario is described as playful. Obviously यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे already playful है and therefore does not appear to be at risk for dehydration. ठीक है, तो ये आप एक अच्छी response के हिसाब से आप choose कर सकते हैं. Next question पे आते हैं. The parents of a 4-year-old ask the nurse how to manage their child's constipation. Select the nurse's best response. कौन से रिस्पॉन्स बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं? Add 2 ounces of apple or pear juice to the child's diet. अच्छा, तो ये जो 2 ounces of apple juice है, it's most likely not a sufficient quantity to alter a 4-year-old child's bowel movements. तो ये उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता है. Second, be sure your child eats a lot of fresh fruits such as apples and bananas. Although fresh fruits help करता है to decrease constipation, but bananas tend to increase constipation. तो ये नहीं होगा अच्छा response.
Next, encourage your child to drink more fluids. Increasing fluid consumption helps to decrease the hardness of the stool. तो ये correct होगा. Next, decrease the bulky foods such as whole grain breads and brown rice. Whole grain breads जो है and brown rice जो है, they are high in fiber and decrease the and help to decrease constipation. तो um, आ, फिर भी जो सबसे ज़्यादा अच्छा, ये ठीक ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है वो नंबर 3 होगा, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा आप फ्लूइड्स खाएंगे तो वही सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है नर्स की तरफ से, ठीक है। तो 4th भी आप कैंसिल ही कर दीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही डिस्कशन रहेगा, हम यहाँ पे ही एंड करना चाहेंगे। अगर आपको इस तरह से इंटरेक्टिव सेशंस चाहिए, और अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए कोई कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप कर रहे हो, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा, सभी लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट लिंक सब मिल जाएगा। मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, पोर्टल एक्सेस। एंड अगर आपको सीधा हमारे स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप सीधे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।